Okay. Hey guys, I hope all of you are doing very well. Now this brings us to the next section of chemical properties. Okay, इसके पहले section में आपने पढ़ा था regarding the CO bond breakage. Now we are going to study regarding the oxygen hydrogen bond breakage. Okay, reactions काफी simple है and you will be actually surprised to know how could this be so simple. But yes, the most important thing is managing the mechanisms. Okay, so now OH bond breakage के हम ब्रेकेज के बारे में हम पढ़ेंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट दिस रिएक्शन नाउ. ठीक है, तो सबसे पहला रिएक्शन है रिएक्शन विद एसिड. ओके, नाउ लेट मी मेक इट क्लियर, इट्स नॉट द inorganic acids. Okay, so the acids that we are going to study is basically the carboxylic acid. Okay, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर लिखते हैं. I have this R. Now this is connected to C and there is an OH over here, right? And then there is a double bond O. Okay, I've written it little bit in a complicated way because I want you to now understand things can be complicated as well because organic chemistry is not that easy. Okay, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं. So you have this R, C double bond O, OH, right? तो ये है एक कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, now this is going to be treated with maybe ROH. तो मैं उसे ऐसे लिखूंगा HO. Now I'm going to write this as R dash, right? So basically क्या होगा, इसमें हम यूज करेंगे a dehydrating agent that is concentrated H2SO4. Correct? Now what exactly do we get here? Correct? So now in this case we are not going to use totally concentrated reagent because there is a reason. Alcohols concentrated sulfuric acid की वजह से they undergo intermolecular dehydration, intramolecular dehydration, right? So हम use करेंगे not too much concentrated but yes sufficiently concentrated but little bit dilute, you can say, right? So in this case what exactly happens over here? तो H2SO4 की वजह से क्या होगा यहाँ पे? Now this OH and this H is going to go as water, right? So what do we get here? We will be getting R and then there is going to be C double bond O, right? And there is going to be OR dash plus H2, right? So ये जो functional group है that is COO, this group is called as an ester functional group. Okay, so basically alcohols react with acid, okay, to form a very interesting series of compound that is ester, right? And this is intermolecular dehydration and not the intramolecular. दो अलग-अलग molecules के साथ हो रहे हैं, right? So let's take a representative example. ठीक है, तो इसमें मैं use करूँगा acetic acid. So you have CH3, now C double bond O, and there is going to be OH, right? Now अगर यहाँ पे Na होता, ONA, CH3CONA, you would call it as sodium acetate. Okay, so why I'm telling you all this because now you will be able to know what is the name of the product. Okay, so मैं यहाँ पे लिखूंगा C2H5. ठीक है, तो reaction is carried out in presence of dilute H2SO4. इसमें होगा dehydration, intermolecular dehydration, और हमें क्या मिलेगा? So we will be getting something like this, CH3 and then I have C double bond O and then I have this OC2H5, right? So this is again very easy, plus H2, correct? So जैसे कि मैंने कहा अगर CH3COONA होता तो हम इसे कहते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, जिसको कहते हैं सोडियम एसिटेट, राइट? तो ये बेसिकली क्या है? दिस इज कॉल्ड एज इथाइल एसिटेट. ओके, इसके IUPAC नेम्स आप पढ़ेंगे इन द सेक्शन ऑन carboxylic acids and esters. For the time being, remember this is ethyl acetate, which is an ester. Okay, so basically this is the reaction. Now we will be doing the mechanism in the next chapter, but I want you to figure out how the mechanism works. Okay, I know most of you may not be able to do it because it's a little bit complicated, but at least it's worth a try. Okay, so this mechanism is there in the next topic and it's a very big mechanism, but at least आप try कर सकते हैं, right? ठीक है, so this was about reaction with acids. So अब हम देखते हैं next set of reactions. इसमें हम पढ़ेंगे reactions with acid chloride. Exactly acid chloride है क्या? Right? Acid chloride है compounds which have this structure. So you have R, C double bond O, right? And then there is a Cl. इसे हम बोलेंगे acid chloride. ठीक है, और अगर मैं लिखूं इस तरह से CH3 C double bond O, right?
CH3 C double bond OCl, you call it as acetyl chloride. ओके, तो अब हम देखते हैं रिएक्शन कैसे होगा। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं RC डबल बॉन्ड OCl, राइट। लेट्स ट्राई टू राइट थिंग्स इन अ पैरेलल वे। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड OCl, राइट। लेट्स ट्राई टू राइट इन अ पैरेलल वे, ठीक है। मैं इसको ट्रीट करता हूँ, मैं इसे उल्टा लिखता हूँ। सो आई राइट हियर HOR डैश। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ HOR डैश मतलब अलग है, तो आई एम गोइंग टू राइट हियर C2H5, राइट। So basically इस reaction में क्या होगा? The same thing is going to happen. HNCl will be going out. Okay, HNCl will be going out in the form of HCl. So again here also HCl is released. ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? ध्यान से देखिए. So we will be getting ester again, right? So you will be having RCOOR dash, right? Plus HCl. ठीक है, and then here you will be getting CH3 C double bond O C2H5, right? Plus HCl. So can you see the product again is ester, right? So the product here is again ester, correct? तो अगर आप एसिड ले या एसिड का डेरिवेटिव ले आपको एस्टर ही मिलेगा. Okay, now here is an example, here is an aromatic compound which I am going to give you as an assignment. Okay, so now there is going to be C double bond O. तो ये इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड. ओके, और इसे मैं ट्रीट करता हूँ HOCH3 के साथ. ठीक है, तो ये रिएक्शन है आपका प्रैक्टिस रिएक्शन. रिएक्शन में क्या होगा, H और Cl निकल जाएगा, राइट. So what exactly is the product? You can try it on your own. Pause the video, write the product, and then you can compare. Okay, let's do it. So you will be having the benzene ring over here, correct? And then this will be connected to C double bond O, and then here you will be having OCH3. तो इसका नाम क्या है? क्योंकि ये बेंजोइक का डेरिवेटिव है, you can write it as methyl benzoate, right? Benzoic acid का डेरिवेटिव है, right? So this is basically reaction with acid chloride. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद एसिड अमाइड. ओके, इट्स अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. लेट्स सी व्हाट एन अमाइड फंक्शनल ग्रुप लुक्स लाइक. सो जो अमाइड है वो बनता है अमाइन से, राइट. तो अमाइन फंक्शनल ग्रुप क्या है, मैंने डाल दिया यहाँ पे NH2. ठीक है, तो एसिड का अमाइड है ये, राइट. सो इसे हम कहेंगे एसिटामाइड, क्योंकि अगर आप इसको तोड़ के यहाँ पे OH डाल दो, यहाँ पे NH3 डाल दो, तो इट इज गोइंग टू बी एसिटिक एसिड प्लस अमोनिया. ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज द अमाइड फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, तो मैं अभी कुछ इस तरह से लिखूंगा RC डबल बॉन्ड O NH2, राइट, एंड देन प्लस, सो आई राइट हियर HOCH3. ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये रिएक्शन बहुत ही सिंपल है. So NH2 and H will go in the form of NH3, okay, and then you will be getting the same thing R C double bond O, and then you have OCH3. ठीक है, now the main problem of this reaction is pretty much slow. Okay, so this reaction is not studied that much, but at least you can have an idea what exactly happens in this reaction. ये reaction बहुत ही slow है because base is generated, राइट, बेस इज जनरेटेड. सो इसके अपने कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. सो क्योंकि NH3 एक बेस है, यू कैन यूज एन एसिड, राइट, एज द कैटलिस्ट, दैट इज HCl आप यूज करेंगे. तो यहाँ पे जो NH3 जो बनेगा, राइट, तो वो NH3 HCl के साथ रिएक्ट करेगा और हमें मिलेगा NH4Cl. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट में हमें क्या मिला. सो दिस इज NH3 प्लस HCl. ठीक है, राइट. सो दिस इज अबाउट द रिएक्शन विद amide. So I'll just write down the representative reaction, CH3 C double bond O NH2, right. तो इसका नाम है acetamide. Okay, so the name of this compound is acetamide. The IUPAC name is ethanamide. Okay, तो ये है HOCH3. Okay, so basically what do you get here, you get the same famous compound जो आप पिछले दो स्लाइड से पढ़ रहे हैं, right. So basically the same thing happens over here. So मैं यहाँ पे लिखूंगा OCH3, right? Reaction in HCl, correct? So what do you have? What happens here? So you get NH4Cl. Okay, reaction again is pretty much simple. Okay, तो आपने देखा एसिड का कोई भी डेरिवेटिव अगर हम ले और उसे अल्कोहल से ट्रीट करें तो हमें एक ही प्रोडक्ट बार बार मिल रहा है, that is nothing but ester, right? Very simple.
नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस एनहाइड्राइड। ओके, तो एनहाइड्राइड बेसिकली क्या है, ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ सी डबल बॉन्ड ओ, राइट। मैं लिख रहा हूँ एक और सी डबल बॉन्ड ओ, राइट। अगर मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया ऑक्सीजन के साथ, so this becomes an anhydride group. I can put an R over here, I can put an R over here, right? So just I can put an R over here, correct? तो अब हम इसको देखते हैं क्या होगा इसमें। So you will be getting R C double bond O, right? And then you have O C double bond O R, correct? और मैं यहाँ पे substituted product भी लिख देता हूँ, CH3 C double bond O, and then this is connected to O, and then you have C double bond O, ये है CH3। now एक बात बताइए यहाँ पे, तो कैन यू सी अगर मैं यहाँ पे ब्लर कर दूँ, राइट। ओके, आई जस्ट डू वन थिंग, आई जस्ट टेक दिस आउट। अगर मैं इस O के साथ H डाल दूँ तो क्या बनेगा, एसिटिक एसिड, राइट। ठीक है, हाँ अब एक काम कर देता हूँ, मैं इस पे बॉक्स डाल देता हूँ CH3COOH, राइट। तो कैन यू सी हियर बोथ दी एसिड से बना है, राइट। एसिटिक एसिड से बनने के वजह से इसे हम कहेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड। ओके ओके, जस्ट अ सेकेंड एवरीवन, यस, एसिटिक एनहाइड्राइड। ओके, तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड, और मैं इसे ट्रीट करता हूं अगेन योर सेम कंपाउंड HOR डैश। यहाँ पे मैं लिखूंगा HOC2H5, right? So what do you get? I want you to pause the video and think and see what do you get here basically. Okay, it's very simple to understand. ध्यान से देखिए क्या होगा, यहाँ पे CO बॉन्ड की तरफ देखेंगे हम, देखिए। Okay, so basically in this case you will be having this means considerably the same thing is going to be there every single part. Okay, so basically क्या होगा इसमें होगा ये जो पार्ट है CH, this part is going to go with this R. Okay, so sorry, this part is going to go with H, तो आपको क्या मिलेगा, RCOOR dash, right? Okay, let me make it more simpler for you. Okay, so now what exactly is going to happen, this particular part, okay, is going to go with this, very simple. So आपको मिलेगा एक एसिड RC डबल बॉन्ड OH, sorry OR dash, ठीक है, and then you will be getting RC डबल बॉन्ड OH, very simple। तो ये है RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। सो दिस इज नथिंग, आपको मिलेगा एसिड प्लस एस्टर दोनों, ठीक है। So now let's see what exactly happens over here. So you will be having CH3 C double bond O, right? And then this is going to be O, and then you have C double bond O. Sorry. Okay. Yes. So you have OC2H5, correct? And then with this you can also write CH3 COOH, right? So again you get ethyl acetate. So the reactions are pretty much simple to understand. आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि मतलब किस तरह से आप रिएक्शन करेंगे, ठीक है। So this was about reactions, chemical reactions, ठीक है। Okay. So what is the ultimate conclusion that you can say? The ultimate conclusion is that अगर आप किसी भी acid derivative को लें, right? किसी भी acid derivative को, you will get the same thing only. Okay? You'll be getting the same thing, practically the same product, that is an ester, every single time. Okay. So this was about the acid anhydride, and yes, that brings us to the end of this particular slide. Thank you.